मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ, आप भी क्लियर हैं, बिल्कुल परफेक्ट। सीताराम 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 कहिए, जाएगी दिया खेरा, आएगी दिया। सीताराम 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 कहिए, जाएगी दिया खेरा, आएगी दिया। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान में जान, हाँ मेरा सही, जाएंगे दिया के राम, आएगी गिरेगी। सीताराम 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 कहे, जाएगी दिया के राम, आएगी गिरेगी। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। फल आशताब शुभ कर्म करत रहे, जाए रे धिरा तेरा, ताए रे धिरहि। सीताराम 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 कहे, जाए रे धिरा तेरा, ताए रे धिरहि। जिंदगी के दौर को हाथ देना नाथ के, जिंदगी के दौर को हाथ देना नाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी निवास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी निवास दे। धन्यवाद देवान राम राम कहे, जाए रे देना के राम, आए रे गिरहि। सीताराम 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 कहे, जाए रे देना के राम, आए रे गिरहि। आशाएं राम जी से दुसिया छोड़ दे, आशाएं राम जी से दुसिया छोड़ दे। नाताएं राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाताएं राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहे, जाए रे के राम, आए रे गिरहि। सीताराम 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 कहे, जाए रे के राम, आए रे गिरहि।
प्यारे राम रस दिए जय रिधि रखे राम तारे रिधि रजिए सीताराम 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 कहिए जय रिधि रखे राम तारे रिधि रजिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna. Dandavat pranams. Akhilesh Prabhu, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. We'll hear you speak later towards the end. I'd like to invite everybody who's on the program today. Vanchakapadrubhyascha kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. First of all, I'd like to thank Shyam Prabhu for organizing the platform, and Damodar Prabhu in the background who's organizing all the speakers and when they should speak. And to Chaitanya Das, who's doing the translation, I think today. We'll try and post the live link to the translation on the chat. If it's not already there, could I ask Shyam Prabhu to post the link, please, for those who cannot understand the English? Most of our speakers today, or all our speakers today, are English speakers. So I'd like to ask the patience of the Hindi speakers to please stay with us. Don't leave, even though you don't understand the language. It's transcendental sound vibration. Just like Sham, before Akhilesh spoke, he asked if the kirtan is in Hindi or in English. Kirtan is always in Samadhi Bhasha. So this Samadhi Bhasha will touch your heart. So without much ado, I'd like to ask Divya Didi, please, if you could show yourself on the screen, unmute your mic. Thank you, Divya Manjari Didi. Hare Krishna, welcome to the program. A very short introduction, although Divya can have a long introduction as well, but she's very dear to Srila Gurudev, and her family is also very dear to him. I can see when they have their exchanging, they're very loving exchanges. Divya has many skills and she works very much in the background. She's working for a communications company abroad. She stays sometimes in Dublin, in Ireland, and sometimes also in Holland. She's originally from Suriname background, but please excuse me if I haven't said enough about you, and your service is very much appreciated. You have many skills. So without much ado, please share with us your realization and offering to Srila Gurudev so that we can all be benefited. Thank you very much for coming today. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Dhanwads. Om Gyantimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Gaura Prishtaya Bhutale Shrimatam Bhaktivedanta Vana Iti Namine Vandeham Bhakti Chakoram Gaurangani Preshtitam Shrimate Bhaktivedanta Swami Vanam Namastubhyam Shri Radhaika Nishtitam Rasayana Kathamritam Sankirtanam Anandadham Goswaminam Vanam Namah Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayaniti Namine Namo Vishnupadaya Keshav Pristhaya Bhotale Shri Srimad Bhaktivedanta Vamaniti Namine Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasani Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to offer my unlimited, most humble obeisances unto the lotus feet of my... English માં છે lecture. So first of all, I offer my unlimited, most humble obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, my Param Aradhyatma, my Guru Padma, Om Vishnu Pad Ashtotrasit, Shri Srimad Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj. I offer my humble obeisances unto the entire Rupanuga Guru Varga, to all previous acharyas, and to all Vaishnavas, Vaishnavis that are present today, my humble obeisances. In this world, Gurudeva is our biggest well-wisher. Throughout our lives, Gurudeva has been like a father to us, to myself and to my brother Radhaka. We lost our dad, Sundar Gopal Das, at a relatively young age and very suddenly. But Gurudeva has never left our side. Our dad, Sundar Gopal Das, left his material body 2 years ago. It was actually during the pandemic, during the holy month of Kartik. And as soon as Gurudeva learned, he was informed about our dad, Sundar Gopal Das, leaving his material body, Gurudeva got so upset about not being able to physically travel to us, because during the pandemic, there was a global travel ban and the borders were closed. But that did not stop Gurudeva from supporting us to ensure that we were all right, while he personally took care of everything that had to be done for our father. So the following year, it was actually the second year of the pandemic, it was again during the holy month of Kartik that we somehow managed to obtain approval to travel to India with our family. So together with my mother, Radha Sundari Dasi, and with my brother, Radha Kandas, we traveled to Sri Govardhan Dham to meet with Gurudeva. And I remember this moment very clearly. We arrived at the Sri Giridhari Gaudiya Math in the morning, in the early morning. And when we arrived, we noticed that the morning program was going on in the temple. The temple was packed with devotees, and we could see the sannyasis sitting on the stage and giving the morning lecture. So we silently, in a way unnoticed, went to sit in the back of the temple, at the back of the temple. And when the Harikatha was finished, the morning program was finished, all the devotees left the temple. The sannyasis, they got down from the stage, they all left, they all went away. And we were amongst the last ones to leave the temple, thinking that everyone was already gone. But as soon as we walked out of the temple, we looked around the corner and we saw Gurudeva. He had noticed us entering the temple, and he was standing there all along, waiting to pick us up. So Gurudeva was waiting for us, and he ordered us to come with him. So we followed him up the stairs. You know, in the Sri Giridhari Gaudiya Math, his room is on the rooftop. So we followed him up to the stairs to his room. And in his room, Gurudeva ordered us to sit down. And he started ordering plates to give us breakfast. And we were like, no, Gurudeva, we cannot accept this from you. You sit down, we serve you. But Gurudeva insisted that we would sit down. So we sat down, and then with his own hands, Gurudeva started giving us breakfast, and it was the typical Indian breakfast during parikrama. So it was bread pakoras and sweets, and he did this with his own hands. He was giving us breakfast, and then Gurudeva, he started telling us about the relationship that he had with our dad, with Sundar Gopal Das, narrating stories about the interactions they had, recalling memories and the last times that they had met. And in this moment,
it was in this moment that I realized that in this whole world, Gurudeva is our biggest and truest well-wisher, always looking after his disciples. And the reasons that I'm sharing such a personal anecdote with you today is because this demonstrates that Gurudeva is the embodiment of kindness and compassion to his disciples, and that no one in this world is closer to us than Gurudeva. And it's actually moments like this that make me wonder, are we serving Gurudeva, or is Gurudeva mostly serving us? So sometimes we might think we are serving Gurudeva, but in fact, Gurudeva is giving us the biggest treasure of all. He's mercifully giving us a drop of transcendental faith and bestowing upon us the treasure of Krishna's name. And in this way, we will always be indebted to him. So I cannot try to glorify Gurudeva without mentioning his spiritual masters and the ones that inspired him. Since his boyhood, Gurudeva was very attached to Chaitanya Mahaprabhu and to Nityananda Prabhu, and who used to worship their lotus feet. But talking about his early life, Gurudeva was inspired by his uncle, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Stotraset Sri Srimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, who served as the temple commander of the Sri Devananda Gaudiya Math. In Gurudeva's early childhood, his mother used to go to the Sri Devananda Gaudiya Math. And this was mostly during the time of the Sri Navadvip Dham Parikrama. And she would glorify Srila Madhusudan Goswami Maharaj. And she would glorify Srila Narayan Goswami Maharaj. And Gurudeva would listen to this. And a few years later, Gurudeva went to the Sri Devananda Gaudiya Math himself. And when Gurudeva experienced the love, the affection, and the mercy that his uncle, Srila Madhusudan Goswami Maharaj, gave to him, Gurudeva decided to never return home, and he stayed in the month. So eventually, Gurudeva developed a very strong attachment to our Param Gurudeva, Srila Narayan Goswami Maharaj. And as you all know, Gurudeva has been serving Param Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj from the Mathura Math since the year 1982. And Gurudeva has been traveling the world ever since in over 35 different countries under the shelter and by the instructions of his spiritual masters. Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Stotraset Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Stotraset Sri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. So actually, Srila Narayan Goswami Maharaj, he would sometimes also glorify Srila Vaman Goswami Maharaj. And he would say that he never saw Srila Vaman Goswami Maharaj taking praise from others. And you see, these days, many people who give explanations from the scriptures, they enjoy taking praise. But having known Srila Vaman Goswami Maharaj for so long, he never saw him doing so, not even by accident. And this is exactly the mood of our Gurudeva. And similarly, actually, Srila Vaman Goswami Maharaj, he was called the embodiment of kindness and compassion. And this is exactly who Gurudeva is to us, to his disciples, following in the footsteps of his spiritual masters. And actually, during this year's Navadvip Dham Parikrama, Sri Navadvip Dham Parikrama 2022, on one of the days, we went to some place for darshan with the whole Parikrama group. And the present sannyasis of our mat, they stopped and they started glorifying each other. So at some point, they would also start glorifying our Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Ban Goswami. And they would tell how in the time of that Srila Narayan Goswami Maharaj was physically with us, how the sannyasis, how the brahmacharis,
they would go out to collect donations. And they would tell how our Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, he would never keep anything to himself. Everything Gurudeva collected would directly go to the mud. And they were glorifying Gurudeva for this character. And this is the nature of our Gurudeva. By nature, Gurudeva is so simple, so humble, tolerant, and overflowing with Guru Nishtha. So in this way, I've spoken a little about Gurudeva being our biggest well-wisher in this world. I've spoken some words about his early life, his spiritual masters. But let me dive deeper into the glories of Sri Guru. Guru Tattva. Srila Gurudeva is not an ordinary devotee. Srila Vaman Goswami Maharaj, he once wrote about the glories of Ashraya Vigraha Sri Guru Padma. And he explained that Sri Guru is the most beloved of Sri Krishna. He is an eternally perfect inhabitant of Vraj. In Madhurya Ras, he is a gopi himself, or a maiden of Vraj. We have to see Gurudeva as Bhagwan in the form of an Acharya. Acharya Vigraha, the abode of love. Even Sri Krishna is bound by his love. Gurudeva's desires are Krishna's desires. His mercy is Krishna's mercy. Darshan of Guru is darshan of Krishna. And love for Guru is love for Krishna. In this way, Gurudeva serves as an eternal companion of Krishna. Actually, in Chaitanya Charitamrita, it's Madhya Lila. We find the verse. Brahmana Brahmrite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prashade Pai Bhakti Lata Bij. It means that by the causeless mercy of Guru and Krishna, a devotional practitioner can receive the seed of bhakti. In this verse, Guru Krishna, it has two meanings. It means that it's the combined mercy of Sri Guru and Krishna, but it also means that Guru is a manifestation of Krishna. Guru and Krishna are non-different in this world. And this is also confirmed in Chaitanya Charitamrita. It's Adi Lila. It states, Guru Krishna Rupahan Shashira Praman Guru Rupe Krishna Kripa Karina Bhaktagan. So in this way, Srila Narayan Goswami Maharaj, our Param Gurudeva, he also explained that a bona fide Guru is a manifestation of Krishna himself. And Sri Krishna might not always get to us directly, but Gurudeva doesn't Gurudeva? Gurudeva continues to travel the world, despite all discomforts he might experience. We hardly see him taking rest. And if it were to Gurudeva, he would give Harikatha at least 3 times a day. He just came from Mexico. He's in the US now, going to Brazil afterwards, then going back to India for Bengal Prachar, after which he will again start preparing for Sri Navadvibham Parikram. So we should realize that the mercy of Krishna is manifesting as the mercy of Gurudeva. And it is from a bona fide spiritual master, who is Krishna himself as his manifestation, Ashraya Vigraha, that we can pray to get the seed of bhakti. The bhakti lata. What is bhakti lata? Bhakti lata is Krishna seva vasana, the desire to serve Krishna. So in this way, we are very fortunate that in this lifetime, we have a bona fide spiritual master, Gurudeva, as our constant guide. But we also have to ask ourselves, are we fully opening our hearts to what Gurudeva has come to give to us? And what is it that Gurudeva has come to give to us? Actually, Gurudeva's pranam mantra gives away the answer.
We say, Shri Radhaika Nishtitam Rasayana Kathamritam Sankirtanam Anandadham Goswaminam Vanam Namaha. It means that Gurudeva comes to give us this nectarian Harikatha that brings us closer to devotion to Srimati Radhika, Radha Dasyam, which is our ultimate goal. And in his lectures, Gurudeva emphasizes that for us to achieve this, we need Shraddha. Shraddha means firm faith. Shraddha means that one has a firm and unflinching conviction that all I have to do is engage in Krishna Bhakti, to render unflinching one-pointed service to Gurudeva. And this faith will gradually help us to become firmly fixed in devotional service. This is the way of sadhana bhakti, the execution of devotional service according to the regulative principles. This is the gradual development of love for Godhead, and this is what Gurudeva has come to give to us. But Gurudeva also explains, where do we get this Shraddha from? Sometimes Gurudeva would jokingly say, you cannot go to the supermarket and get Shraddha. Where does this faith come from? It comes from Srimati Radhika herself. And similarly, we sing, Gurudeva Kripa Binduneya Karoe Dashe Trinapeksha Tihina. Kripa Bindu Diya. Kripa means mercy. And Gurudeva explains that this mercy comes from Srimati Radhika herself. Gurudeva explains, without the mercy of Srimati Radhika, this Shraddha, this faith, it won't manifest in our hearts. This is Radha Kripa. So let me conclude with this. Srila Narayan Goswami Maharaj, our Param Gurudeva, he would sometimes also explain, we have to be able to put our hands on our heart and ask ourselves, is my Shraddha, is that transcendental? Or is it unreal? Is it mortal? Is it material? Are we ready to offer our lives to Hari, Guru, and Vaishnava? Are we really? Because if we are, then that is real transcendental Shraddha. But it's not so easy to attain. Actually, Param Gurudeva Srila Narayan Goswami Maharaj, he would also jokingly say, I will put a barometer in your heart to see if this real Shraddha is there. And then you will see that you will all fail. Only some rare will be qualified. But Gurudeva wants us to develop this real transcendental Shraddha. And he has come to inject our hearts with this. So Shraddha is when we have firm faith in the lotus feet of Gurudeva, faith in Shastra, and when we believe that our lives will be successful if we serve the lotus feet of Gurudeva. And when we serve the lotus feet of Gurudeva, Gurudeva may give his mercy, which is the tendency to serve Radha and Krishna. This is what Gurudeva has come to give us. And I pray that one day we will be able to fully open up our hearts to this. So let me end by offering millions of my obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, my Paramaradhyatma, my Guru Padmatma, Srila Bhaktivedanta Ban Goswami Maharaj, who is like a bumblebee, drinking rays of pure devotion, pure bhakti, who is close to Gauranga Mahaprabhu himself, and who grants us nectarian Harikatha that will bring us closer to devotion to Srimati Radharani. Vanchakalpatrubhyasya kripasin hubhyeva patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Dandavat pranams, Didi. Very nicely presented. Thank you very much for sharing all of that with us. Very thorough as well, very referenced, and your realizations to go along with that. You mentioned many things about who is actually serving who, and sometimes this is very true. We as if a sincere disciple will always think that Sri Guru is actually serving us. We cannot serve him. He's here to
take us back to Godhead, and that's the best service that any person can do for us. So though we don't have to come in this repeated cycle of birth and death. You mentioned his early childhood, his 35 different countries that he travels through or traveled in. But I was thinking also that every place that he visits, wherever he goes, passes through, even if he doesn't stop, he blesses that place somehow or another. All the imagine all the jivas that see him at the airport, on the plane, even sitting next to him or behind him or in front of him, just seeing his saffron cloth is a blessing. So thank you for bringing that to us. And he has nothing to take for himself. He was saying that he's selfless. He's very honest. He's very selfless. And from the very beginning, we see that by the example that you gave, that all that he collected on Bhiksha, he would always give to his Gurudev, every single paisa. So and there's only another example of such a person is that Shamarani Didi, and that Gurudev is quoted. Yeah, so that was very nice. And this Ashray Vigraha Shri Guru is very nice verse also. If you wouldn't mind sharing it with us on the chat, that would be really appreciated, so that we can take that. Thank you. And our Danwa pranams to Radha Sundari Didi, your mother, and Radhakant Prabhu, your brother, and also to your late father Sundar Gopal Das, who Gurudev loves very dearly. And thank you very much again. Hare Krishna. Hope to see you again soon, and hope to hear your kirtans as well that Gurudev likes to hear. Jai. Thank you for this mercy. Dandavat pranam, Prabhuji. Dandavats Didi. So we have our next speaker, Indira Didi, Devi Dasi, from UK originally, living in India for some time now. She comes and goes between the two countries, also travels with Gurudev extensively wherever she can, and has many different services. And I think you might know her, may know her. If not, then she's in charge of this Jewels of the Heart audiobook, and she instigated that with Chaitanya Das. And if you want to know more about that, you can always contact her, message her. We hope that all of Shri Gurudev's books will be done as an audiobook, so there's lots of service there. But without much ado, I'd like to introduce her to you. Please, Didi, share with us your offering, and we hope to be blessed by that. Thank you very much. Hare Krishna. If you'd like to unmute, thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanyavad, Prabhuji. Thank you. Thank you for your kind introduction. I don't have a huge amount to say. I feel extremely unqualified on every level, really, to glorify Gurudev. And was considering it would probably take me about 100,000 lifetimes to be able to really glorify him in any way that might do service to his true beauty. But yeah, I can try a few words, and hopefully I won't. Please forgive me in advance if I make any offense. And if you can hear noise in the background, I also apologize. It's a bit noisy where I am. So, okay. Om Jnanatimanandasya Jananjana Shalakaya Chakshurimilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Andeham Bhakti Chakram Gorangapni Chaprastitam Sumate Bhaktivedanta Samivanam Namastubhyam Sri Radha Kanishtatam Rasayana Katamitam Sankirtanam Nandanam Gosamanandanam Namaha. So I don't have much of a brain, so I don't have many beautiful slokas to share with you. But I was really contemplating today what it would really mean for me to glorify Gurudev. What is alive in me?
to do that. And I suppose I felt perhaps the most important thing for me, at least, because unfortunately I can't really think of for him, but for me, would be to just to speak about what wakes me up in what wakes me up, I suppose, somehow, because that feels like somehow the most important, because I mean, I'm sure I haven't been able to see all of the glorifications, but I'm sure many of his incredible qualities have been extolled at length, and it's kind of infinite. How the expression of his qualities externally, and I mean, he's of course exhibiting all imaginable virtues, but I suppose for me, I realized this morning in my contemplation, hope you can hear me okay, in my contemplation. Just a little bit louder. Yeah, we can hear you, but yeah, just a little. Is that better? Do a little bit louder. Yeah. Thank you. Maybe if I hold it like this, is that better? Yeah. Yeah. So it was just I just felt, for me, I think the essence of what wakes me up is really this most, in fact, I can't even really put words to it. Words are so insufficient to describe the depth of this place that it touches in my heart, really, of his it's like the only word I can really use would be pristine. It's like a pristine innocence, more delicate than anything I've ever known. And it comes so quietly through my heart. And most of the time I spend my life running from it, as I'm sure many of us do, but I know I do extensively, and because it's something that I can feel will break me open totally. But it's really such a phenomenal thing, and so simple at the same time. Of course, like the beauty of a child, but deeper than that, of course, because he's deeper than I can possibly fathom, really. And so I can only really speak of this is what's alive in me, is the just the beauty. He is the embodiment of beauty itself and innocence itself at its very core, the deepest I've ever experienced in this world, and even beyond in spiritual explorations in other avenues, let's say. So I just feel immensely grateful to him that he that just like one God sister of mine said one time, Gauranga Mahaprabhu really, he spread his net wide. He really threw his net wide too, and trawling the sea floor. I feel like one of those creatures down at the bottom that it's been trawled up
and caught in the net despite extensive struggle. And yeah. By Gurudeva's mercy, I can attempt to realize something of that, of the beauty and innocence that he embodies, and hopefully really be of service to him and this most beautiful divine mission that's so unique in this world, so obsessed with everything that we can get from it, everything that we can get from the world, as opposed to what we can give. So yeah. What else to say? Gurudeva has been very merciful and has allowed me to make this audiobook, Jewels of the Heart audiobook, which is one of his books, and as you all know, I'm sure. And so yeah, it's been a a real process of purification, and I'm hopeful that it can be of service to Gurudeva. So please, everybody, if you like it, then please do share it with your networks, and hopefully more people can be touched by this incredible beauty that Gurudev shares with the world. Yeah, I think there are many things I could say, but I won't take too much of your time, and I feel like that's probably enough, really. Yeah. Thank you very much, Siddhi. Very sweet and very simple, very from the heart. Just your appreciation of Gurudev is very personal, and very interesting that you say what wakes me up, or what inspires us, what drives us, what makes us stay in bhakti and devotion. It's really Gurudev. And those key words that you mention about him being pristine, his beauty and his childlike innocence and his purity to go with that is very, very significant and very, very much appreciated, I think, by everybody who comes across him, who can understand him or connect with him in some way. So that's really very significant. Thank you very much for sharing that with us. I just wanted to say that you have 100,000 lives left yet to achieve your goal to glorify Srila Gurudeva. So that's like we're counting the number of leaves on the neem tree. Was it the neem tree? The imla tree, the tamarind tree. And being so enthusiastic that Mahaprabhu blessed him that after all those lifetimes have passed, he will attain Mahaprabhu. So you don't have very much long left to go. Thank you. Just keep your enthusiasm and to keep serving. Those lifetimes will quickly pass and disappear. They'll seem like a flash in the pan. Thank you. Are you in any way involved in the bhakti, the next audio book? The next audio back to Bhagavan. Yes. At this stage, I haven't been involved in it. I think that's Krishna Priya's realm, as far as I'm aware. So that's been the instruction for Krishna Priya to do back to Bhagavan. Let's see if Gurudev wants us. We are very keen to do Madhusmita Sri Radha, but let's see whether that's his desire or not. So
Yeah. I would Watch the always, space. sorry, yes, I would always say that something like that you can do, and then I think Gurudev blesses it afterwards. It's, you don't you don't. I'm trying to say that sometimes we wait for Gurudev to, and then the Yeah, time right. passes so long, Mm, and mm. I'm sure it's not, and you're not doing anything wrong, and we're not doing anything wrong, like in service, but just, yes, of course, always check with him, but don't wait too Yeah. long. Yeah, okay, yeah, thank you. Just start. That's a good point. Yes, yeah, and actually now is a good time also, so maybe we will. Yeah, when you have, I'm just, please excuse me for being presumptuous in this matter and probably stepping over my authority altogether, but from having learned to wait so long for Gurudev's reply, it's almost, it could be. Okay, thank you very much, Siddhi. Okay, thank you so much. Thank you for having me. Vanchakapatruvyascha kripasindhudeva patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo Vaishnavibhyo. Vaishnavibhyo Namo Namaha. Just to conclude with, Oh, can't hear you. if there's anything good that should be done, it should be done immediately. If there's anything that you're not sure about, you should wait and think. And if you know that something is not good to do at all, you should not do it, of course. So in this way, in this regard, seva should always be done with enthusiasm, of course, with the blessings of the senior Vaishnavas. And with that, thank you very much, Devi. The next speaker that we have is a mature devotee, Satyavrat Prabhu. If you can share your screen with us. Here I am. Satyavrat from Chile, but he lives in Finland. And it was a pleasure to meet him in London, just at Gurudev's last visit. That was our first introduction to him. I say mature because he's very mature, but he's very friendly and approachable, and so many other good qualities. Very enthusiastic as well to serve Gurudev. I think he's prepared to do anything and try anything to please Shri Guru. So he's a family man. He's looking after his father in Finland at the moment. And there's so much more to learn about him yet because he's very new. I think he took Diksha only this time, a few weeks ago when Gurudev was in London. And also he could tell us when he took Harinam. So thank you very much, Satyavrat Prabhu. Thank you. Thank you for coming on the platform. Dandavad Pranams. I want to offer my humble obeisances unto my lotus feet of my spiritual master, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, to Srila Bhaktivedanta Ramanama Goswami Maharaj, and to Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. I also want to offer my humble obeisances to my god sisters and my god brothers. Speaking in public is not my thing. I am definitely not knowledgeable when it comes to scriptures and things like that. So I feel humbled and yet undeserving to be in front of you today. So if because of my ignorance and my nerves, I commit any offenses, please forgive me. Until today, I didn't know, even now, I didn't know what to say and how to say it without removing myself from the equation. But I guess that's the way I need to do it. My association with Gurudev is very short. I took my Harinam some months ago and my Diksha I still think it's weeks ago. And but yet it's very intense. So what I'm going to do is I'm going to open my heart to you and
try to not to cry, and I want you to share with you how I see Gurudev through my own eyes. I often meditate on what is Guru Tattva, or how do we know we're in presence of bona fide Guru. There are plenty of sources and explanations that goes into deep of what is a bona fide Guru, what is a bogus Guru, but how does it work in principle for people with limited knowledge like me? I mean, I'm just an ignorant fool. I can perhaps say it's instinct, maybe a gut feeling. You know that something is out of place. You know that something is not right. At least that's the way I read the situation. And since I saw a picture of Gurudev for the first time until I met him in London, I realized that it was something unique. I don't know how to call it. Maybe it's I felt like I was present in Krishna's mercy or Krishna's compassion. I just still can't really put my finger in it. I can really describe how nervous I was the day he arrived in London. And I was also super erratic in my own behavior. And I think I spent most of the day without knowing where my passport was because I was super nervous. And every time I think about it, I feel super embarrassed. I mean, I think I was all over the place. And but then there he was, this giant guy with beautiful eyes and wide smile. And sorry, I'm getting choked up. And when he hugged me, I completely melted. I felt surrendered. And sorry. And I don't give in so easily. He's one of the sweetest and more kindest person I ever met. I love how he likes to keep touch with every one of us. A little message here, a little message there. That warm proximity he transmits. I've chanted my japas for quite some time now, but I think under Gurudev's mercy, I could feel the difference. I could see the progress. During the week I spent with him, I got to understand his mood. And I got to be thankful and appreciate every little kind of me time I've got with him. I got to serve him personally. No matter how tired or overwhelmed he was with attention, he will always ask you with a smile, "Are you okay?" And you know, humility is a natural symptom of those who love God, someone said. The funny thing is, I thought that trip to London is going to be all about me, all about my spiritual journey, but I was so wrong. I mean, the trip was all about him, to serve him. If he wants to talk, you talk. If he wants you to sing, you sing. And if he wants you to dance, this is my own experience. He's just gonna look at you and you're gonna just see it in your eyes, dance. So you dance, period. That's communication without words. He scans the place. He knows exactly what's going on. And we are there to understand the message. Srila Gurudeva Swami Maharaj once said, I need to read this. If you don't have faith in Krishna Katha, you can't hear. The Katha will never enter in your ears. You have to respect the sadhu, have complete faith in his words. With a humble attitude, then surrender.
with his attitude. Have a surrendering attitude. Watching and listening Gurudev's Harikathas online is amazing. I mean, it's no questions. But witnessing that live, less than a meter away, feeling the energy, it's just beyond words. And his laughter at his own jokes, and it's just priceless. I mean, it's absolutely contagious. His kirtans just drags you into the dance floor, and then you end up high in the sky. It took about 2 weeks for my body to come back to me after the experience. All this dancing, and I was just completely floored, but still happy. Some days ago, I was in a business meeting. I was quite bored, so I started surfing the internet. I was very professional. And while I was checking different websites with some content, I came across a text about some questions and answers. I think the text is The Nature of the Guileless Servant of Sri Guru by Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur. And one of the questions was, what is the true nature of the servant of Sri Guru? It's a quite lengthy text. It goes way over my head, but there's one bit of it that stayed with me, and I had to let that one sink in for a little bit because it reflects the way I see my Gurudev. And I want to read it because I want to stay truthful to the text. It says, I pray whether or not Srila Gurudev accepts my service, as I am qualified. I shall always remain present to render service exclusively to him by all means, through my mind, through my body, and through my words. Although I am unqualified, my sole recourse is the fact that he is especially compassionate to those who are the most unqualified. Thus, with the hope of receiving his causeless compassion, my greed to engage in his service increases more and more. I think when I read this, it just went like an arrow. And I get very emotional every time I read it, so I try to read it very quickly because I don't want to make a drama out of this. Personally, if I can briefly speak about myself, I'm convinced that Krishna has given a spiritual path that is packed with obstacles, because these obstacles are giving me the strength to overcome. These obstacles are making my service sincere. These obstacles have given me anger to realize that I need to be compassionate. And my Gurudev has played a role in this, in channeling this energy in the right direction. Gurudev and his mercy has saved me in every possible way a person can be saved. I'm not upset anymore. Sorry. I'm not upset anymore. I'm calmed. I'm a work in progress, I know, but he took me nevertheless with all my shortcomings. I stopped running. Someone spoke about running, so actually, I stopped running. He gave me a new extended family. You, my beautiful people, brought balance and new responsibilities into my life. He has given me a new meaning for the word service, which now I understand, doing something with sincere love. So serve him and my peers is my mission in this lifetime and in the life to come, because I'm sure I made some bookings
for some return tickets into this world. So, so yeah, sorry if I got emotional, but yes, Dandavat Pranams. I have really no more to say. I think you're muted. Yes. Thank you, Satyavrat Prabhu. Very nice and very succinct and very clearly, I think from your heart, you're expressing your emotions of how you felt when you met Gurudev and how you feel when you're with him. Some very striking points, like if you are in live connection with him, 1 meter away, sitting in front of him in class, you get a totally different impression to seeing him on a YouTube videos, listening to him on a Zoom or something. Although that's important as well in our situation in this world at this time, we can't all be there with him at the same time, in front of him, physically present for practical reasons. And I can vouch for that out of total frustration. So it's very true. I think Anadi Prabhu a few days ago mentioned the same thing. It's, and Gurudev Shilanarayan Maharaj also, he said this black box will cheat you, because at that time these recorders, cassette recorders were very popular, and people were trying to get recordings of Srila Gurudev. Of course, they're very important and very precious to us now, but you always emphasize how important it is to listen in front and sit in front of Shri Guru and take that instruction directly from him and trying to follow, of course. And you mentioned that very nicely. And the true nature of the servant of Shri Guru. If you wouldn't mind posting that on our chat, just as a little clip that we could share that, look at that, meditate on that, and your appreciation of your new extended family. And I was thinking, those people, in this material world, we say first come, first serve. But in the spiritual world, it's not like that. You may come last and you may get served first. You get the most amount of mercy. And we see that in the people who come to Srila Gurudev, new people who excel in their service to Sri Guru. And the ones who have been there for 10, 15, 20 years, they think, well, that's amazing. I mean, I have not been able to do that or achieve that in the 20 years that I've been with Gurudev. So it goes to previous lives. We're continuing our spiritual journey from previous lives. That's the only way to explain this process. It's not based on this material time and place. So thank you very much for sharing that with us. Some very nice realizations. Thank you. We hope to see you again soon. And take care of the family. Thank you so much. And take care of yourself. And thank you very much again. Thank you very much. So I think next we have Balabhadra Prabhu. He's also a very dear friend of ours. If you're here, Balabhadra Prabhu, can you show your screen? I can't see him. Out of the 20 people that are here with us today, maybe Damodar Prabhu, if you're there, could give him a ring, see if he's available. Or I could give him a ring. Sorry, just to ask for your patience. जो आप हिंदी वाले हैं, जो हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हैं और कम समझते हैं, आपका खूब खूब आभार। आप सब हमारे साथ हैं आज, और ज्यादा तो शायद अखिलेश प्रभु वो हिंदी में बोलेंगे ना, अखिलेश प्रभु? Portuguese. He can't speak Portuguese. वो भी समाधि भाषा होगा. So आप हिंदी में बोलेंगे ना? Yes. Okay. So if you don't mind, we can take your presentation and then we can come back to Balabhadra if we can get in touch with him. Is that okay? वो ठीक है? Yes, Prabhu. Yes, why not? Everything is okay. Okay. Thank you, Shyam Prabhu. Confirmation from the boss. Confirmation from the Gurudev, not boss. You are the boss.
No, you're the boss. You are the boss. Vanchakalpatruvyascha kripasinudevaccha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namah. Akhilesh Prabhu is very dear servant of Srila Gurudev. He's always very keen to be close to Gurudev and serve him personally in his Vapu service and also Vani service, because Akhilesh knows many shlokas and Gurudev often uses him as a reference point. He's very studious. He studies a lot. माफ कीजिए अखिलेश प्रभु, मैं इंग्लिश में आपका इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ. It's not problem. You can speak. Or he's yes, very energetic, very enthusiastic, always ready to serve the Vaishnavas and follow their instructions and serve the disciples of Srila Gurudev. I think that's what pleases Shri Guru, and he's a very good example of that. So I don't know what much more to say. Thank you very much for coming and sharing your offering with us so we can be blessed. Hare Krishna. My voice is clear, no, Prabhu? Yes. Have you listened clearly? Yeah, you can speak a little louder. Hindi mein baat kijiye. Aapka. Okay. All right. Hare Krishna. I hope there is some translation. Or if there isn't a translation, I apologize for that. Somebody in English can do one. We haven't had the link. Actually, Prabhu, Chaitanya Prabhu, he will translate later. Actually, he is in studio now. He is doing some recording. Then he said, Okay. I will translate later. Okay. Thank you very much, Sham, for that information. Hare Krishna. Akhilesh Prabhu. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Gurve Gaurachandraya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Vananti Namine Namo Vishnu Padaya Gaurpisthaya Bhutale Shri Srimad Bhaktivedanta Vananti Namine Vandeham Bhakti Chakoram Gaurang Nij Prishchatam Srimati Bhaktivedanta Swami Vanam Namah Tubhyam Shri Radha Eknishtitam Rasayanam Kathamitam Sankirtanam Anandam Goswami Vanam Namah Vanchakalpatrubhasya Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo. सबसे पहले अपने गुरुपाद श्री श्री भक्ति वेदांत गुरु महाराज वन महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव को यथाउचित हरे कृष्ण। गुरुदेव की महिमा का वर्णन बड़ा दुर्लभ है, नहीं कर सकते इस छोटी से जीवा से। भी प्रयास करूंगा, कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। सर्वप्रथम गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु जो वो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसी का वर्णन करते हुए शिव जी पार्वती जी को गुरु तत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे पार्वती, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकारस्य अंधकार से रुकारस्य निरोधक, अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीये। हे पार्वती, जो गुकारस्य अंधकार से, जो गु शब्द है उसका अर्थ है अंधकार, इग्नोरेंस, और रुकारस्य निरोधित्वा, रु शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, जो प्रकाश की तरफ ले जाने वाले, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। गुरु इति अभिधीये, उनको गुरु कहा जाता है। तो गुरुदेव के लिए ये शब्द पूर्णतः ही सार्थक है। ये शब्द कि जो बद्ध जीव जो भोगों में लगे हुए थे उनको भजन में लगा दें। गु मतलब अंधकार, जो सब भोग में ही लगे हुए, सामान्य तीर्थ पशु इसमें लगे हुए थे, उन सब जीवों को भी भगवान ने क्या किया? भगवत सेवा में लगा दिया। यही क्या है? प्रकाश की तरफ ले जाना। प्रकाश मतलब भगवत भजन की तरफ जो ले जाते हैं वही वास्तव में गुरु है। गुरु कौन कहलाने के लिए योग्य है?
तो इसके लिए बताया गया अम्बरीश ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, उनको उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि गुरु न सस्या स्वजन न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या देव न तत्सस्या प्रतिष्ठा सस्या न मोचित संप्रति। वो सगा संबंधी, वो गुरु, स्वजन, भाई, बंधु सब कौन है जो हमें हरि भजन में लगाते हैं, नहीं लगाते, इस भव सागर से पार करने के लिए हमें प्रेरित नहीं करते, वो वास्तव में हमारे सगे संबंधी नहीं, वो गुरु नहीं। तो गुरु कौन है जो हमें हरि भजन में लगाते हैं, उनको ही गुरु कहा है। तो गुरुदेव ऐसे करुणा में है कि गुरुदेव विचार नहीं करते। मैंने देखा कि कोई भी आ जाए गुरुदेव के पास, गुरुदेव बस एक बार बोलना है कि गुरुदेव ये हरि नाम लेना चाहता है। अच्छा हरि नाम लेना है, जल्दी ला हरि नाम, माला लेके माला ले, तुरंत इंतजार नहीं करते कि अच्छा हरि नाम लेना, सब कुछ छोड़ देंगे गुरुदेव। जब हरि नाम देने का किसी को बोलते हरि नाम नहीं लेगा, अच्छा उसको बेटा उसको प्रसाद पूछो जल्दी से, ऐसे गुरुदेव कहते कि अच्छा उसको रोको उसको प्रसाद खिलाओ जल्दी, प्रसाद खिलाते और फिर अच्छा उसको बुला उसको बाद में प्रसाद बाद में, पहले हरि नाम दूंगा इसको। तो गुरुदेव उत्कंठित रहते कि कैसे जीवों का उद्धार हो। कोई भी उनके पास हरि नाम के लिए लेने के लिए आ जाए, कभी मना नहीं किया। और साक्षात मैं और श्याम प्रभु का मेरा तो हरि नाम पूज्य भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज से हुआ, श्याम प्रभु का भी। और मुझे याद है कि जब हमारा दीक्षा होने वाला था, जब फर्स्ट टाइम मैं गया था नवदीप में श्याम प्रभु जी उनकी कृपा से, तो वहां पे जब पहुंचे तो मेरा दीक्षा होना था पूज्य भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज से। एक्चुअली में डिसाइड तो ये होता पूज्य भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज से हमें दीक्षा लेनी है, मगर जब वहां पहुंचे तो महाराज जी से मैंने निवेदन किया कि महाराज जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि अगले साल ले लेना, इस साल क्यों नहीं लेते। तो महाराज जी से मैंने बोला महाराज अगले साल में जीवित रहूं ना रहूं, फिर अगला जीवन मिले ना मिले, कोई अपराध हो जाए उसके फलस्वरूप में पतन हो जाएगा, फिर कैसे दीक्षा, कम से कम दीक्षा तो ले एक जन्म। बोलते जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक हमारा हरि भजन स्टार्ट नहीं होता। वास्तव में जो बोला है कि आदो गुरु पादस्य, आदो जो भक्ति का पहला अंग है वो क्या है, गुरु का पादस्य ग्रहण करना। तो जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं करते तब तक हमारी भजन स्टार्ट नहीं होता। तो मैं महाराज जी से कम 1 1.5 घंटा कम से बात हुई कि महाराज जी मैं दीक्षा लेनी। तो महाराज जी ने बोला कि ठीक है अगले साल ले लेना। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी इस साल ले लें मैं अगले साल आऊंगा नहीं आऊंगा पता नहीं। और इससे श्रेष्ठ स्थान की आवश्यकता है, महाप्रभु का धाम और वैष्णव के बीच में, और सब वैष्णव लोग हैं यहाँ पे, इससे सर्वोत्तम स्थान कौन सा हो सकता है। तो मेरी इच्छा इसी साल लेना। तो महाराज जी ने बोला कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो ले लो, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दूं तो आप अगले साल ले लेना। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इच्छा है, कोई है तुम्हारे मन में कि किसी से दीक्षा लेनी है, तो आपके मन में है तो उनसे आप ले लो। तो बहुत विचार किया मैंने किससे लूं। तो गुरुदेव के साथ में जब भक्त लोग जाते परिक्रमा में, तो लास्ट डे था, जो लास्ट दिन जब जाते हैं हम मामी गाछी जाते हैं, आमी गाछी, जहाँ पे लास्ट वृंदावन ठाकुर जी का बर्थ प्लेस है। तो वहां पे जब जा रहे थे गुरुदेव, तो मैंने भक्तों को क्या देखा कि गुरुदेव चल रहे हैं रास्ते में, तो कुछ भक्त लोग उनके आगे पीछे से आगे से ईंट जो पत्थर होते हैं ना उसको हटा रहे हैं कि गुरुदेव के चरणों में ना चुभ जाए। और कुछ भक्त लोग ना छाता लेकर के गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो मैंने पहली बार देखा कि कोई मतलब गुरु की सेवा के लिए उनके चरणों के नीचे कुछ आ ना जाए, कुछ उनके चरणों में ना लग जाए। तो पहली बार देखा कि ऐसी सेवा प्रवृत्ति किसके अंदर हो सकती है। फिर देखा छाता लेके जा रहे हैं, मैंने कहा ऐसा तो पहली बार देखा मैंने कि गुरु के पीछे इस तरह से सेवा का भाव भक्तों के बीच में। तो अच्छा लगा मुझे जो गुरु की सेवा कैसे होनी चाहिए देखने को मिला। फिर जब गुरुदेव वहां गए, वृंदावन ठाकुर जी का जो बर्थ प्लेस है, तो वहां पे गुरुदेव ने जब हरि कथा बोली कि उन्होंने बोला कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। मतलब जो जल है वो पियो छान करके पीना चाहिए, और जो गुरु है उसको जान करके करना चाहिए, ऐसे ही नहीं किसी को भी गुरु कर।
तो जब ये बात मैंने सुनी और फिर गुरुदेव ने एक शब्द और बोला था, गुरु मिले लाख लाख शिष्य मिले अभाग, शिष्य मिले लाख लाख गुरु मिले अभाग। इस कलयुग में गुरु गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी गुरु मिल जाए तो शिष्य मिलना दुर्लभ है। तो जब गुरुदेव ने ये शब्द बोले, मैंने कहा कोई साधारण जीव तो नहीं बोल सकता, कि जो बोल रहा है कि गुरु को जब ध्यान कर, मतलब गुरु को भी अगर ध्यान करने जा रहे तो उसका पूरा अपना इंक्वायरी कर लो, उनको जांच पड़ताल कर लो, जान करके उनको गुरु बोले। ऐसे नहीं कि गए अब ले रहे हैं तो भेड़ चाल हम भी ले लें। तो जब ये शब्द गुरुदेव ने बोला तो मेरे मन में लगा कि ऐसा शब्द कोई साधारण जीव नहीं बोल सकता। किसी को शिष्य बनाने का होता है कि लालच के मेरे शिष्य बन जाए, तो वो ये शब्द कैसे बोल सकता है, सच्ची बात को कैसे बोल सकता है। तो ये गुरुदेव ने बोला है, तो तभी मेरे हृदय में आया कि नहीं, इनसे ही दीक्षा ले। ठान लिया कि मैंने, हाँ यही है, इनसे ही दीक्षा लेना। तो देखो दीक्षा तो हमारी होनी थी किससे, कुछ बात भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज, और शिक्षा हो गई गुरुदेव से। तो जब गुरुदेव के पास गए, शाम प्रभु मैं गए, तो गुरुदेव से बोला, गुरुदेव अरे हमें दीक्षा लेनी है। तो मैंने, अच्छा किसके शरण में, अपने हरिनाम के। तो मैंने बताया कि पूज्य भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज के लिए हम हरिनाम। अच्छा अच्छा, उनसे पूछ के आओ, उनसे परमिशन लेके आओ, तब दूंगा मैं आप सबको दीक्षा। तो हम महाराज जी बोले कि हमने परमिशन ले लिया, उन्होंने कहा कि आप ले लो। गुरुदेव ने फिर दे दी। गुरुदेव विचार नहीं करते हैं कि क्या खाता नहीं पीता, कुछ नहीं, जो आया हरि नाम दे दिया। कि जैसे महाप्रभु महावदन है, ऐसे गुरुदेव भी महावदन है, विचार नहीं करते कि कौन योग्य है अयोग्य है। गुरुदेव बोलते हैं कि अरे कम से कम हरि नाम ले लेगा तो कम से कम कुछ नहीं तो माला, एक माला तो करेगा, एक माला करेगा, उससे सुकृति बनेगी। सुकृति बनेगी, उसके फल से क्या होगा, कम से कम उसका इस जन्म में, फिर अगला जन्म भी सुकृति बनेगी। तो एक गुरुदेव बोलते हैं कि एक जन्म जन्म कम से कम सुकृति इकट्ठी कर लो, ताकि अगला जन्म में तुम्हारा भजन हो सके। एक जीवन कम से कम सुकृति इकट्ठी। कैसे गुरुदेव हैं कि वे पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, जो आता है उनके शरण में तुरंत दे देते हैं। तो ऐसे गुरु हैं, इसीलिए वह जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे गुरुदेव हैं कि मैं तो कीड़े में, जैसे बोलते हैं नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, तो ऐसे ही मैं पड़ा हुआ था। सब जानते मेरी स्थिति क्या है। तो गुरुदेव ऐसे जीवों को भी अपने कृपा पात्र बना लेते। ऐसे ही भागवतम में भगवान उद्धव को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि निर्दयम आदयम सुलभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मैं अनुकूल नमस्ते रितम मान भवादिनाथ आत्मा। कि हे उद्धव, कि जो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और ये मैंने जीव को कृपा करके दे दिया। सुलभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि जिस भव सागर पार करने के लिए दृढ़ नौका के समान है, और गुरु कर्णधारम, और जीव को क्या करना चाहिए, एक गुरु को धारण करना चाहिए। निर्देह माधव सुलभ सुकल्पम गुरु करण मैं अनुकूल नभेस्तरितम, कि मैं क्या करता हूँ, जब गुरु करण कर लेता है तो उसको मैं अनुकूल वायु प्रदान कर देता हूँ। अनुकूल वायु मतलब है कि साधु संग प्रदान कर देते हैं, यही अनुकूल वायु। और जो इतनी सारी सुविधा पा करके भी भव सागर से पार नहीं होने का प्रयास करता, बोले आत्मा। तो गुरुदेव इस बात को वर्णन कर रहे थे कि गुरुदेव ने पूछा कि आत्मा का मतलब क्या है, मेरे से ही पूछा कि इसका मतलब क्या है। गुरुदेव आत्मा का मतलब कि शरीर से नहीं, आत्मा का मतलब ये बारंबार मतलब भजन नहीं किया तो इसका जीवन व्यर्थ गया। मैंने ये बोला तो गुरुदेव बोला नहीं, गुरुदेव बोला कि आत्मा का मतलब क्या, इस जीवन भजन नहीं किया तो अगला जीवन भी क्या होगा, अगले जीवन फिर निम्न योनि में जाएगा, और अगला जीवन खराब, उससे अगला जीवन, ऐसे क्या होगा, इसके करोड़ों जन्म खराब होंगे। तो क्या है आत्मा, यही क्या है जीवन का आत्मा, कि अपने जीव का, अपनी आत्मा का हत्या कर दिया। तो आत्मा कैसे, तो इसी को उपदेश देते हैं कि मैंने इसे दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, तो जीव को क्या करना है, ऐसे गुरु पाद पर उनको आश्रय ग्रहण करके, उनका आश्रय करके भजन करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। ऐसे भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उद्धव मैं ही आता हूँ आचार्य ग्रहण, कोई साधारण जीव नहीं आता। आचार्य मां विजानियात ना मन कर मत बुद्धि सर्वदेव में, कि हे उद्धव मैं ही आचार्य के रूप में, जब भगवान की कृपा शक्ति ही जब इस धराधाम पे आती है तब वही आचार्य के रूप में आते हैं। वही क्या है आचार्य के रूप में आते हैं। आचार्य माम विजान, वो मेरा ही स्वरूप है साक्षात। आचार्य माम न मन न मर्त्य बुद्धि, उनके प्रति मर्त्य बुद्धि नहीं, कि ये भी संसारी, ये भी बीमार होते हैं, ये भी संसारी जीव है,
किस तरह की बुद्धि मत रखना, सर्वदेव में वो सब कुछ जानने वाले। बस यहाँ पे दो डिफरेंस है, भगवान को बोला जाता है विषय विग्रह और गुरु को बोला जाता है आशय विग्रह। बोले वो सेव्य भगवान है और ये सेवक भगवान है। भगवान बोला जाता है इनको भी, तो इनको बोला जाता है सेवक भगवान और उनको बोला जाता है सेव्य भगवान। तो गुरु क्या है, आश्रय विग्रह। तो शिशु जो साधक है उसको आशय विग्रह के सानिध्य में रह करके भजन करना। आचार्य माम भी आशय विग्रह के रूप सानिध्य में रह करके भगवत भजन करना चाहिए। इसी को भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव आचार्य मेरा ही स्वरूप है, उनके आश्रय में रह करके उनके बड़े मत बुद्धि में रखना, क्यों मेरा ही वो साक्षात स्वरूप है, आश्रय विग्रह के रूप में वही कृपा शक्ति ही हमारे समक्ष आती है। तो और भी बोले जिससे गुरु संतुष्ट रहते हैं, यस्य यह मंत्र स गुरु साक्षात, यह गुरु स हरि स्वयं, यस्य तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। जिससे भगवान गुरुदेव जो मंत्र दे रहे वो क्या है, साक्षात गुरुदेव का ही एक स्वरूप है। ये मंत्र स गुरु साक्षात, यह गुरु स भगवान स्वयं, वही भगवत स्वरूप है। और जिससे गुरु संतुष्ट रहते हैं उसे भगवान भी संतुष्ट। और गुरुदेव की महिमा में मैंने कुछ स्मरण आया तो वो मैंने लिखा है, वो बता देता हूँ। जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है गुरुदेव की महिमा है, कोई गुरुदेव साधारण जीव तो है नहीं इस जड़ जगत के, तो मैंने प्रैक्टिकल ये चीज देखी। मैंने एक बार याद होगा, श्याम प्रभु भी होंगे, श्याम प्रभु को याद होगा कि गुरुदेव अयोध्या जब गए थे एक बार, तो श्याम प्रभु ने अपने घर पे 2 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, 2 दिन के लिए, कि गुरुदेव की हरि कथा के लिए ऑर्गेनाइज किया था। तो आश्चर्य मैंने क्या देखा उस टाइम कि गुरुदेव 2 दिन का प्रोग्राम था, पंडाल लगा था 2 दिन। तो जिस दिन पंडाल लगा उसी दिन चारों तरफ बारिश हो रही है, चारों तरफ। श्याम प्रभु को याद होगा, चारों तरफ बारिश हो रही है। और जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, जहाँ पे हरि कथा हो रही है, वहां पे बारिश नहीं हुई। श्याम प्रभु थे, वृंदावन प्रभु थे, मैं तो बाकी और बहुत सारे भक्त लोग थे उसमें, कृष्णदास प्रभु जी, ऐसे बहुत सारे भक्त लोग थे उस टाइम। तो सब मैंने साक्षात देखा कि सब जगह बारिश हो रही है, और जहाँ पे गुरुदेव हरि कथा कर रहे हैं वहां बारिश नहीं। और जब बारिश दूसरा दिन, पहले दिन बारिश नहीं, सब जगह बारिश हो रही है, आंधी तूफान सब चल रहा है, उधर कुछ नहीं हुआ। फिर सेकंड डे भी ऐसे ही हुआ, हरि कथा प्रसाद हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया। जब हरि कथा प्रसाद सब कुछ कंप्लीट हो गया तो क्या हुआ, जैसे ही हरि कथा फिनिश हुई, सबने प्रसाद पाया, उसके बाद इतनी तेज आंधी आई कि सब पंडाल उड़ गया, सारा का पंडाल उखड़ गया। श्याम प्रभु भी वहां पे पूछ रहे थे कि सब उखड़ गया। तो ये क्या है, गुरुदेव की महिमा है कि जहाँ पे गुरुदेव विराजमान रहते हैं तो वहां पे क्या देवता भी उनको उस स्थान का संरक्षण करते हैं। ऐसे गुरुपाद पर जहाँ पे विराजमान होते हैं उस स्थान को तो देवता लोग भी उस स्थान की रक्षा करते हैं। तो गुरुदेव की ऐसी महिमा है। जैसे आता है जड़ भजी का कि जब उनको बलि के लिए ले गए तो वही दुर्गा जी जो काली स्वरूप वही निकल के और उनकी रक्षा करने के लिए, ऐसे ही गुरुपाद में जैसे महाभागवत जहाँ पे रहते हैं वहां पे देवता भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे गुरुपाद। और अभी प्रैक्टिकली अभी जब एक और एक्सीडेंट हुआ, खुद गुरुदेव ने बोला मुझसे, बोलना नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ कि गुरुदेव जब नगला में भागवत कथा थी तो गुरुदेव को उस पर गर्म पानी उन्हें देना होता है, तो गुरुदेव को हवा आ रही थी तो साइड में जो विंडो थी वो सब क्लोज किया। तो मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव यहाँ पे ना वो कबूतर के वो है, उसकी वजह से स्मेल आती है। कह रहे हाँ गुरुदेव कह रहे मुझे भी आती है स्मेल, तो हटा दिया। तो गुरुदेव ऐसी बात करते करते बोले, मैंने गुरुदेव यहाँ पे ये काफी दिन से बंद था ये कमरा, ये ना इसलिए थोड़ा स्मेल ज्यादा है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं काफी दिन से बंद नहीं था, जहाँ पे काफी दिन से यहाँ पे भूत रहता था, one ghost is staying there, their place. And Gurudev gave, I am coming, and Bhagavad Katha happened there, that's why she is done with, leave this place. Gurudev spoke to me कि यहाँ पे एक भूत रहता था, वो चला गया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो गुरुदेव का ऐसा प्रताप देखो, उस घर में रह रहा था। और जैसे ही गुरुदेव वहां पे विराजमान हुए, भागवत कथा यहाँ पे विराजमान हुए, तो उस स्थान को छोड़ के चला गया। गुरुदेव ने रियलाइज किया, गुरुदेव इस बात को बोल रहे हैं कि जहाँ पे जैसे अजामिल का आता है ना कि धुंधकारी का कि भागवत कथा होती तो उसका उद्धार रहता है,
ऐसे गुरुदेव के चरण उस स्थान पे पड़े तो उस भूत का उद्धार हो। ये प्रैक्टिकल देखा मैंने, गुरुदेव बोल रहे थे एक बार। गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गुरुदेव ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, उसमें बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें गुरुदेव ने क्या गागर में सागर है। जितने ग्रंथ गुरुदेव ने लिखे हैं अपने, वो सब क्या कोई साधारण नहीं है। क्योंकि जब गुरुदेव उसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो मैं गुरुदेव के पास था, तो गुरुदेव ट्रांसलेट कर रहे थे, तो मैंने कहा गुरुदेव ये सब चीजें तो जैव धर्म में वर्णन है और बाकी कई जगह ग्रंथों में मैंने सुना, तो ये सब चीज तो मैंने देखा गुरुदेव ने क्या किया, उनको भी कंक्लूजन करके उन सब ग्रंथों का जो कंक्लूजन है वो अपने ज्वेल्स ऑफ हार्ट में और बाकी सब ग्रंथों में वो सबको मेंशन कर रखा है सुंदर रूप से। अगर उसको ही अगर ठीक से समझ ले तो वो सब बातें हम समझ सकते हैं कि क्या चीज वर्णन है हमारे ग्रंथों के अंदर। तो गुरुदेव के ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथों को उन्होंने रचना करी। गुरुदेव का जो प्रणाम मंत्र है, गुरुदेव की उसी में महिमा वर्णन है। उसमें नमो विष्णु पदाय गौर पिष्टाय भूतले, इसमें एक शब्द आया है गौर पिष्टाय। जैसे महाप्रभु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरिताशेन, कि जैसे महाप्रभु के लिए आता है नमो महावदन्याय, कि जितने अवतार हुए उसमें सबको मोक्ष प्रदान कर दिया, अपना धाम प्रदान किया, मगर प्रेम नहीं प्रदान किया। मतलब महाप्रभु ने जैसे सनातन गोस्वामी जब उनसे मिले तो उनके लिए शब्द यूज किया उन्होंने, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय, कि सबने जो भगवान के जितने अवतार है उस अवतारों में सबको किसी को मोक्ष दे दिया, किसी को अपना धाम दे दिया, किसी को धूलोक दे दिया, मत अपना जो कृष्ण प्रेम है, प्रेम विधान, इसको प्रदान नहीं किया किसी, ये महाप्रभु ने प्रदान किया। तो उसके लिए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदान, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले, इसलिए उनके लिए आया नमो महावदन्याय। उनके ही कृपा पाते हैं महाप्रभु, इसलिए आए यहाँ पे शब्द गौर पृष्ठा है, कि महाप्रभु के कृपा पात्र, कि महाप्रभु के अति अति कृपा पात्र, अति प्रिय, इसलिए गौर पृष्ठा है, उनके द्वारा भेजे हुए हैं साक्षात, उनकी ही कृपा शक्ति है साक्षात महाप्रभु। जैसे महाप्रभु नमो महावदन्याय है, ऐसे गुरुदेव नमो महावदन्याय, इसलिए उनके गौर पृष्ठा है शब्द आया इसके लिए। तो ऐसे गुरुदेव हैं कि वो उस प्रेम को प्रदान करने के लिए आए। हमेशा देखना गुरुदेव हरि कथा करते हैं तो उसमें हरि कथा में करते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रज में पहुंच ही जाते हैं उस प्रेम कृष्ण प्रेम को प्रदान करने। तो हमें देखना हरि कथा में वो करते 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 कहीं ना कहीं तो ब्रज को स्पर्श कर जाते हैं। ऐसे ही गौर पिछता है। वंदे हम भक्ति चकोर, कि वंदे हम भक्ति चकोरम गौरांग निज पृष्ठितम, इसमें एक शब्द है भक्ति चकोर। भक्ति चकोर का मतलब क्या है, एक चकोर पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र का ही जल पान करता है, भूखा मर जाएगा मगर सरोवर इन सब का जल पान नहीं करेगा, केवल प्रतीक्षा करता है कि जब स्वाति नक्षत्र का जब जब जल वर्षा होगा तभी उसको ग्रहण करे। तो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करे और किसी का नहीं। ऐसे ही गुरुदेव क्या है कि केवल हरि कथा, जो ब्रज की हरि कथा है उसको ही गुणगान करने में लगे, उन्हीं हरि कथा और कहीं की हरि कथा नहीं, हमेशा ब्रज की हरि कथा को ही गुणगान करने में, मंदिरों की महिमा गुणगान करने, गुरुवर की महिमा को गुणगान करने में ही उनकी जीवा है ललायत रहती। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं जिस दिन मैं हरि कथा नहीं बोलता तो उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं। बोलते मेरी जीवा में खुजली होने लगती है, गुरुदेव खुजली हो रही है मेरी जीवा में। जब तक गुरुदेव हरि कथा ना बोलने ब्रज, जब तक उनके कोई कथा बोलने का अवसर ना दे तो उनके संतुष्टि नहीं होती। तो गुरुदेव हमेशा क्या है, ब्रज की हरि कथा को ही गुणगान करने, उसी में ही रमन करते हैं। 24 गुरुदेव बोलते हैं मुझे कुछ 24 में 25 घंटा बोलेगा मैं हरि कथा कंटिन्यू बोल सकता हूँ, गुरुदेव बोल रहे थे। तो इसलिए उनके लिए शब्द आया भक्ति चौकर, जो ब्रज की हरि कथा को ही गुणगान करने में ही आनंदित होते, इसलिए भक्ति चौक गौरांग निज पिछते हैं उनके द्वारा। ऐसे गोस्वामी उन्हें नमन तुभ्यम, उनको प्रणाम करते। उसके बाद है शब्द श्री राधा एक निश्चितम, श्री राधा एक निश्चितम। तो इसमें आता है कि राधा जी की कई 5 प्रकार की सखियां, नित्य सखी, प्रिय सखी, प्राण पिष्ट सखी, है ना।
ऐसे 5 प्रकार की सखियां हैं। तो उसमें जो बाकी, हाँ और भी एक और बताया था, गुरुदेव ने बताया था कि सखियों को प्रकार बताया था उसमें से कि जो राधा जी के स्वपक्ष स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सुहृद ऐसे करके बताया था ना गुरुदेव ने। तो उसमें स्वपक्ष जो राधा जी के पक्ष में रहती है, विपक्ष जो उनके अपोज में चंद्रावली है ना, तटस्थ जो दोनों तरफ, सुहृद जो उनके अति प्रिय, उसमें ऐसे वर्णन करते हुए आया। तो जो ललिता सखी हैं उसमें भी क्या है, वो दोनों तरफ रहती हैं, राधा जी की तरफ भी हैं और उनकी तरफ भी, दोनों तरफ। और जो उसमें वृंदा देवी और इन सब का आता है, तो उसमें आता है वो कृष्ण पक्षी हैं। और तुम ललिता सखी का जो वर्णन आता है उसमें ललिता जो विशाखा सखी हैं, ये दोनों के पीछे क्या उभयनिष्ठ रहती हैं, उनके दोनों के पीछे दोनों के प्रति उनका प्रीति रहता है। मगर यहाँ शब्द आया श्री राधा एक निश्चिता, राधा जी की एक निष्ठ कौन रहती है, मंजरी। जो मंजरियां कौन है, वो राधा जी की एक निष्ठ। उसमें भक्ति का जो डिवाइडेशन आया, उसमें भक्ति में आया ना कि भक्ति में डिवाइडेशन है, रागानुगा में उसमें डिवाइडेशन में आया, रागानुगा में फिर कामानुगा, संबंध अनुगा, फिर कामानुगा में फिर 2 डिवाइडेशन बताया गया उसमें, एक सम्मोग इच्छा में, तत्त इच्छा, तत्त भाव इच्छा में। तो उसमें सम्मोग इच्छा में ललिता से क्या जो गोपियां ये सब कहा जाता है, उसमें आता है तत्त भाव इच्छा में, तो उसमें मंजरियों का आता है। तो उनका क्या है, ललिता सखी विशाखा सखी का क्या है, वो एकांत में कृष्ण के प्रति मतलब मिलन की इच्छा होती है, मगर ये जो मंजरियां हैं वो राधा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो ऐसे गुरुदेव का इससे राधा जी क्या है, राधा जी के ही प्रति एक निष्ठ होती है मंजरी। उन मंजरियों के लिए ये शब्द आया है एक निष्ठ। एक निष्ठ कौन होती है, राधा जी के एक निष्ठ होती है केवल मंजरी। वो नहीं चाहते कि कृष्ण की सेवा नहीं, वो राधा जी के जैसे परछाई होती है वैसे उनके पीछे पीछे चलती होती है। तो राधा एक निश्चितम, तो ये शब्द जो आया है शब्द यहाँ पे राधा एक निश्चितम, तो राधा एक निश्चितम कौन होती है, मंजरियां होती है। तो गुरुदेव कौन है, राधा एक निश्चितम रसायनम कथामृतम, कि जो राधा जी के एक निष्ठ हैं, एक मंजरी है उनकी, वो रसायनम कथामृतम, और जो ब्रज की रस की कथा को भी वर्णन करने में ही उनमें ही आनंदित होते हैं। कथा अमृतम, उन ब्रज की अमृत कथा को ही गुणगान करने में, रसमय कथा को वर्णन करने में ही आनंदित होते हैं। संकीर्तन आनंद धाम, और जो संकीर्तन महाप्रभु का जो आदेश संकीर्तन आनंद धाम गोस्वामी, जो संकीर्तन महाप्रभु का जो आदेश, पृथ्वी आशी नगर आदि सर्वस्व प्रचार हो मोर नाम, कि पृथ्वी के कोने कोने में मेरे नाम की महिमा, उसी को प्रचार प्रसार करने के लिए आज भी गुरुदेव समस्त समस्त संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उन हरि कथा को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऐसे ही राधा जी के प्रिय पात्र ये राधा एक निष्ठतम गुरुपाद पद है। इसलिए उनके परिणाम में भी देखना, जब स्तुति गान करते हैं क्या करते हैं, आदाब जय स्तो बिना ना दासे नान्यत कदा भी समिक केली देवी आची सखाए ते मम रसस्तु नित्य दासाय कि उसमें श्रुति में कितनी जगह कि राधा जी के अलावा कुछ नहीं चाहते। हाँ देवी काको गदगद जिससे गंधर्वी के निज गणे गणा नाम विधेय, उसमें भी स्तुति में क्या कह रहे हैं कि राधा जी के गण में मुझे शामिल कर लें। लास्ट में तवे वास कि हे राधे रानी आपके बिना मेरी कोई गति नहीं। तो राधा जी की एक निष्ठा में, उनके कथा में, उनके कीर्तन में, उनके गुणगान में, सब जगह वो राधे जी के ही एक निष्ठ, इसलिए उनके लिए शब्द आया राधा एक निष्ठ, कि जो राधा जी की एक निष्ठ है। राधा जी की निष्ठ कौन है, श्री मंजरी ही होती है उनके लिए। इसलिए तो गुरुदेव हमेशा एक कीर्तन गान करते हैं, आनंदित होते हैं। हमेशा मैंने देखा है जब गुरुदेव खुश होते हैं तो इस कीर्तन को गुणगान करते हैं। तव कथामृता तप्त जीवना कविर्वीरिता कल्मषापहं श्रवण मंगला श्रीमदातता भुवि कीर्तिते भूरिधा जना नंदनंदना यशोदनंदना हे दामोदरा हे माधव।
इस कीर्तन में गुरुदेव गुणगान करते हैं और आनंदित होते हैं। तो ब्रज गोपियाँ इस कथा को गुणगान करते हुए इस कीर्तन को गुणगान किए। तब कथा अमृतम तप्त जीवन, कि भगवान की हरि कथा क्या है? तब कथा अमृतम तप्त जीवन। इस संसार में सब जल रहे हैं, संसार दावन सब जल रहे हैं, काम क्रोध मोह, सब अधिदैविक भौतिक, और ये भगवान की हरि कथा है तप्त जीवन। जैसे बोल रहे हैं कि जैसे फॉरेस्ट में आग लग जाए तो और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको फायर ब्रिगेड से नहीं बुझा सकता, वो जब वर्षा हो जाए रेन हो जाए तो वो बुझ जाती है। ऐसे ही भगवान गुरुदेव की हरि कथा क्या है? तब कथा में तप्त जीवन, कि संसार के लोगों को शांत करने, उसकी जो अग्नि है वो शांत करने वाली, तप्त जीवन, उनको जीवन प्रदान करने वाली। जो मरने वाला हो उसको क्या है, उसको अगर कोई प्यासा हो तो उसको जल मिल जाए थोड़ा, तो उसको जीवन मिल जाता है। उसी प्रकार से गुरुदेव की हरि कथा है तप्त जीवन, कि जो संसार में जल रहे हैं, उनको मरने वाले हैं, उनको क्या है, हरि कथा रूपी अमृत को पान करा के जीवन प्रदान कर। ऐसे गुरुदेव तब कथा अमृत तप्त जीवन कवि वीडितम कल। और ऐसे बड़े बड़े कवि लोग इस बात को कह रहे हैं, बड़े बड़े कवि लोग तप्त जीवन कवि वीडितम कलमशा। इस हरि कथा को जो श्रवण करता है उसके सारे कलमश भूल जाते हैं। श्रवण मंगल, जो इस हरि कथा को श्रवण करता है उसका मंगल हो जाए। कथा अमृत तप्त जीवन कवि पीड़ितम कलमशा श्रवण मंगल श्रीमदात्म। और जो श्रीमद भागवत हरि कथा को दान करते हैं, भूवि गृणीति भूरि दजन। इस संसार में बहुत सारे लोग दानी हैं, कोई कंबल का, कोई संसारिक वस्तुओं का दान करता है, मगर सबसे बड़े दानी कौन है इस संसार में? जो इस हरि कथा को दान करते हैं, जो इस प्रेम हरि कथा, ब्रज की हरि कथा को दान करते हैं। इस संसार में सबसे बड़े दानी वही है। इसको, इस बात को कौन कह रहे हैं? श्रीमती राधिका इस बात को कह रही है कि भूवि गृणीति है भूरि दजन। इस संसार में सबसे बड़े दानी कौन है? जो इस हरि कथा को प्रचार प्रसार करते हैं, हरि कथा को संसार के जीवों को प्रदान करते हैं। इस संसार में वही सबसे बड़े दानी। तो ऐसे गुरुदेव इन हरि कथा को प्रचार प्रसार करते अपनी वाणी को पतित। हरि बोल। प्रभु जी अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बता रहा था अखिलेश प्रभु, आपकी मीठी वाणी से हम सबको गुरुदेव के गुणगान प्रदान किया और महिमा के सुनाया। हम खूब खूब आभार है आपका। और कई बात आपने बताई हमको, जैसे गुरु कौन है, जो हम अंधकार से लेकर ज्योति तक ले जाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, गुरुदेव ये भी कई बार बताते हैं हमको। और you said many other things also, the magic of Gurudev, how Gurudev, when he's speaking Hari Katha, if there's any calamity nearby, it does not affect him. Like you gave the example of the rain falling in Navadvip Parikram. Where he was speaking, there was no rain falling. Everywhere else, all around, there's rain, but not where he was speaking. And sometimes also, when he's speaking Govardhan Lila in Bhagavad Katha, sometimes it rains at that time. Like the demigods are reciprocating with that pastime. So he often points this out. A little rain sometimes falls. And when he's in Jagannath Rath Yatra, I have noticed personally in Berlin, he's during Rath Yatra, always some little rain is there. Even in Jagannath Puri, during that time, there is always rain when Jagannath comes out. So this is the blessings, the shower of mercy from the demigods. And also you said that Gurudev, where he is, there are no ghosts. No ghosts come at that place. And he always reminds us, we should not be afraid of these things. If a devotee is chanting in his home, that home cannot have any ghost or spirit or bad. Even if we have Bhagavad Gita in the house, then this is very auspicious. So there's no fear. So you gave that example in Narela when Gurudev was in the room, that
there was a ghost there, but that ghost went away. So it's very, very auspicious. Why Gurudev has come? He has come, like you explained, through the pranam mantra, who he is, his bhakti chokora, his gora nija preshta, and his radha eka nishtitham, and his sankirtanam anandadham. So these qualities you explained and illustrated very nicely. And you gave the example of Tava Kathamritam Tapta Jivanam. This shloka Gurudev loves very much and he recites very often. Who is the greatest donor? And of course, the sadhu who takes us out of this material world and delivers us to the lotus feet of Shri Shri Radha and Krishna is the best donor for anybody. Better than building any hospital or giving any charity of any kind. Better than opening millions of schools, or better than giving, you gave the example of Kamal, like blankets in charity, which Gurudev did during Kartik Parikram. He gave many blankets to many devotees. But better than that is his Harikatha Dan. So we should always pay attention to that and take full advantage of offering our ears and offering our heart. And in this way, our life can be successful. So I'd like to thank everybody today for joining us on this platform. We will close today because I'd like to give apologies from Balabhadra Prabhu from UK. He's not able to join us today, but I'm sure in the next few days we will try to bring him on and he can share his realizations with us. Thank you for all those speakers who are not so familiar with English but stayed to hear us. Aapka khub khub dhanyawad. Sham Prabhu again, thank you, and Damodar Prabhu in the background, thank you also. Tomorrow we will have more speakers. Sham, if you'd like to tell us who they might be. Actually, tomorrow, Prabhuji, still not decided. For one, actually maximum decided. One Prabhu, I will confirm to you. For tomorrow, one is Leela Mai Didi from UK. Okay. Yes. Second one, I think Nalini Didi, she will not come tomorrow. One is Dr. Geeta Didi from Bangalore, you know. Okay. Yes. Another one, Radha Sundari from Lucknow. Okay. One is Vishwarup Prabhu from Vrindavan, you know better than me. Him. Yes. So Sure, I think. Yes. I think Nalini Didi, she will not come. And another speaker will come from the UK. Okay. But still not decided. Tomorrow we will confirm. और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप कृपा करते रहें ऐसे इस तरह से, और आप जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव, जैसे अभी अखिलेश प्रभु ने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया कि गुरुदेव क्या है, राधा रानी के एक परिकर हैं जो इस जगत में आए हैं हम लोगों पे कृपा करने के लिए। ऐसे ही हम आपको क्या मानते हैं, आप गुरुदेव के वास्तविक और नित्य परिकर हैं। तो जब आप आते हैं तो वास्तव में हृदय प्रसन्न होता है और गदगद होता है। तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आपका हाथ सबके सर पर विद्यमान है। तो ये आपका जो वैशिष्ट्य है, जो आपकी सरलता है, इस तरह से आप हम लोगों को प्रदान करते रहें, ये बार बार निवेदन और प्रार्थना। के आशीर्वाद है सबके पर। अच्छा, हम लोगों का विचार ये था कि हम लोग सैटरडे को इसे फिनिश करेंगे, बट बहुत सारे स्पीकर्स बच रहे हैं। Then we want to continue up to Purnima. Purnima means Friday, 6th of January, the last day. तो मैं सुना कि आपका प्रोग्राम रमन गौड़ी मठ में, रमन बिहारी गौड़ी मठ में 1 जनवरी को है। तो 1 जनवरी में आप और शायद दामोदर प्रभु रहेंगे। तो फॉरेन डिवोटी कुछ हैं, वो बोलेंगे। तो उस दिन हम लोग शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि सब लोग मठ में रहेंगे प्रोग्राम में। आई थिंक गुरुदेव विल आल्सो कम ऑन द संडे इन जून, बट स्टिल टाइम इट नॉट डिसाइडेड। ही विल कंफर्म द टाइम, देन वी विल शेयर टू ऑल। और बहुत ही अच्छा रहा प्रभु जी, बहुत सुंदर रूप से। बहुत भक्तों का कमेंट भी आता है कि लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला, जो नहीं जानते थे, बिल्कुल भक्ति से अनभिज्ञ भी थे। तो बहुत सारी चीज लोगों को समझने को मिली। तो और बहुत नए लोगों को भी समझने को मिला। हमारे साथ इसमें बहुत
रेगुलर डिवोटीज हैं, जैसे हमारे एक मोहित प्रभु ही टेकन द हरिनाम टू गुरुदेव, और एक हमारे रामानंद प्रभु, यू नो हिज नेम इज राकेश पुरी, एवरी डे ही विल कम बिफोर 8 PM एंड ही विल गो कंप्लीट ऑल, मतलब सारे लोग जब बोल देते हैं उसके बाद ये लोग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कुछ कुछ हैं इस बारिश के मेढक होते हैं ना, उस तरह से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये लोग रेगुलर हैं। तो और हमारे अर्जुन सखा प्रभु फ्रॉम द्वारिका, ही एवरी टाइम ही विल कम, और कंचन प्रभा दीदी हैं, ये लोग बिल्कुल आते हैं। रेगुलर है, बहुत अच्छा है। हाँ, और तो सबके दे वांट टू धन्यवाद। लिसन केयरफुली। और हमारी एक ऑफरिंग है जो जी। मंगलाचरण, गुरुदेव का मंगलाचरण है। हम्म। उसमें करीब 20 श्लोक है जो गुरुदेव जब क्लास के पहला प्रदान करते हैं और सुनाते हैं हमको। वो श्लोक जो आप चाहते हैं इंग्लिश में है मेरे फाइल, तो मुझे ईमेल कर दे, तो मैं जो इंडिविजुअल, वो हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है, कोई भक्त दिल्ली में कर रहे हैं मंगलाचरण का ट्रांसलेशन हिंदी में, और कोई लैंग्वेजेस है तो उसमें भी हो सकता है। जो भक्तों गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, सॉरी मंगलाचरण सुनते हैं, साथ साथ में आप भी वो श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेंगे। मुझे ईमेल कर देना। जो भक्त लोग, प्रभु जी का कहने का मतलब है कि जो गुरुदेव मंगलाचरण करते हैं प्रारंभ में, लगभग 20 श्लोक प्रभु जी ने बनाया है, वो नोट डाउन किया है। अगर किसी को चाहिए तो वो प्रभु जी को मेल कर सकते हैं, और प्रभु जी उस पे मेल पे भेज देंगे। और प्रभु जी की मेल आईडी इसमें प्रभु जी ने राइट कर दिया, avaria6@hotmail.com। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मैंने एक मेल डाला था, हरे कृष्णा टू ऑल यू, का लेसन था। एक एक करके प्रभु जी, एक एक करके प्लीज। सॉरी। बोलिए प्रभु। यस। तो आपने रिक्वेस्ट किया था कोई डिवोटी अगर इंटरेस्टेड है तो वो व्यास पूजा का हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए, तो मैंने आपको मेल भी डाला है। मैं मेल चेक करूंगा, फिर आपके संपर्क करूंगा प्रभु जी। अर्जुन सखा प्रभु, आप माइक अनम्यूट करिए प्लीज। जी प्रभु जी, मैं चेक करूंगा मेरा मेल और आपके साथ संपर्क में रहेंगे। बिल्कुल, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। चलो, दंडोत प्रणाम टू ऑल महात्मा, especially to Lotus Pita Panang Prabhu and Hare Akhilesh Krishna. Prabhu. He very nicely explained about the Gurudev, and he have many realization with Gurudev. He is very near and dear to Gurudev also. And अखिलेश प्रभु की महिमा का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, अद्भुत है इनकी महिमा, बट ये गायब हो जाते हैं बीच बीच में, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है। नहीं, वो वापस आ जाते, वापस आ जाते हैं। हम सब जाते हो, हम सब आते हैं, आते जाते रहते। ओके, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग कल मिलते हैं 8 बजे। और अगेन थैंक यू सो मच अनंग मोहन प्रभु। थैंक यू श्याम प्रभु, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू हरे दामोदर कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत। धन्यवाद।